News Services Division of All India Radio presents Radio Newsreel. In this edition, Reserve Bank keeps repo rate unchanged at 5.15%. President Ramnath Kovind says success of Ayushman Bharat Health Scheme will be determined by contribution of nursing community. And Commerce and Industry Minister Piyush Goyal inaugurates third edition of the National Public Procurement Conclave in New Delhi. The Reserve Bank of India (RBI) in its fifth bi-monthly monetary policy has kept the policy repo rate unchanged at 5.15%. The six-member Monetary Policy Committee (MPC), headed by Governor Shaktikanta Das, unanimously voted for a status quo policy. The reverse credit policy has also maintained the reverse repo rate at 4.90% and the marginal standing facility rate and bank rate at 5.40%. Interacting with media, RBI Governor Shaktikanta Das said that decisions are in consonance with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index inflation of 4% while supporting growth. The RBI has been preemptive in easing monetary policy, with the easing cycle commencing as early as February of 2019. Rate reductions have occurred in quick succession in every MPC meeting since then. In its decision today, the MPC has committed to maintaining an accommodative stance as long as it is necessary to revive growth, while ensuring that inflation remains within the target. The Governor said the forthcoming Union budget will provide a better insight into further measures. It is also likely that the government may initiate some more counter-cyclical fiscal and other measures to arrest the slowdown. The forthcoming Union budget will provide greater clarity on all these aspects. At this critical juncture, it is of paramount importance that monetary policy and fiscal policy continue to work in coordination to achieve the best results in the national endeavor to revive growth. Here is more from a correspondent. Since its last meeting in October 2019, the MPC said that global economic activity remained subdued, though some signs of resilience are becoming visible and the crude oil prices moved into a narrow range. On the domestic front, the gross domestic product growth moderated to 4.5% year-on-year, while on the supply side, the gross value added growth decelerated to 4.3% in Q2 of 2019-20. As for the growth outlook, the real GDP growth for 2019 and 20 is revised downwards from 6.1% in October policy to 5.0%. The next meeting of the MPC is scheduled during February 4 to 6 next year. Sonali Ghadiyar Patil, Mumbai. President Ramnath Kovind has said that the success of the Ayushman Bharat Health Scheme will be determined by contribution of the nursing community. Mr. Kovind was speaking after presenting the National Florence Nightingale Awards 2019 to outstanding nursing personnel in New Delhi today. This is a monumental health care program in whose success the nursing community shall play a key role. There is a considerable increase in the demand for specialized, competent and highly skilled nurses. There is also a rising demand of human resource for third and fourth level care, which requires quality training institutes. To achieve this, the government has taken several initiatives for further development of pre-services and in-service training, education and upgradation of nursing services. The President gave away 36 awards in 3 different categories on outstanding nursing personnel with meritorious services from across the country. Of the total awards, one was posthumously given to Lini PN, a Kerala-based nurse who sacrificed her life while on duty, caring for the first index case of Nipah virus infection in 2017. Our correspondent spoke to some of the awardees. My name is Sajesh, the Nightingale Award winner, Mrs. Lini's husband. I am very proud of her because she do very well in the nursing. Myself, Achla. I am working as a officiating nursing superintendent from Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi. For the nurses, it is really a proud moment, and we really grateful for the Ministry of Health and Government of India that they are recognizing the motivation and dedication of nurses. The National Florence Nightingale Awards were instituted by the Ministry of Health and Family Welfare in 1973 as a mark of recognition of the meritorious services rendered by nurses to society. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal inaugurated the third edition of the National Public Procurement Conclave in New Delhi today.
The two-day conclave has been organized by Government E-Marketplace GEM in association with the Confederation of Indian Industry. In his inaugural address, Mr. Goel said GEM epitomizes the speed, skill and scale which is essential in an e-marketplace platform. He further said the GEM rests on the three pillars of openness, fairness and inclusiveness and is a symbol of a truly transparent e-marketplace. The minister hoped that during this conclave a roadmap for the future of GEM will be put in place that will unify all government procurement across all ministries and departments. He also hoped that during the two-day deliberations, an actionable agenda will emerge that will facilitate work contracts in the form of tenders to be made available on the GEM portal in future. India is making efforts to move towards a gas-based economy and going to invest $60 billion to develop gas infrastructure in the country. Inaugurating the India Gas Infrastructure Conference in New Delhi today, Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan said the government is taking steps to develop infrastructure for pipelines, city gas distribution and LNG terminals. The target for construction of national highways in the year 2019-20 has been fixed at around 11,000 kilometers in the entire country. From this, the targets for construction of 4-laning are 2,990 kilometers, while 6 to 8 laning of the national highways are 570 kilometers. Minister of Road Transport and Highways Nitin Jairam Gadkari gave this information in Lok Sabha today during the question hour. आने वाले समय में जो 2 to 4 लेन, 4 to 6 लेन, 6 to 8 लेन और उसके साथ साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है ये लगभग हम लोग 100% पूरा इकोनॉमिक वायबिलिटी को स्टडी करके फिर बजट से 10%, 20% सपोर्ट भी एडिशनल देंगे और हम करने का प्रयास करेंगे। हमने एक नया मॉडल निकाला है कि पीपीपी, बीओटी, हाइब्रिड एन्युटी, हम बैंक को टोल जो है 20 साल के लिए मॉर्गेज कर देंगे और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कर्जा लेंगे और कर्जा लेने के बाद वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। Union government today said a total 31,696 megawatts of grid-connected solar power has been set up by the end of October this year in the country. A target of 8,000 megawatts solar power capacity has been set up for the year 2019-20. In a written reply to Lok Sabha, New and Renewable Energy Minister R.K. Singh said central government has set a target for deploying 20,000 megawatts of grid-connected solar power by 2022, which was later revised to 1 lakh megawatts in 2015. Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi today said that the process for Hajj 2020 has been made 100% digital. In a written reply to the Lok Sabha, Mr. Naqvi said this includes online application, e-visa, Hajj mobile app, digital pre-tagging of baggage of pilgrims, e-Masiya, that is e-medical assistance system for Indian pilgrims abroad. Union government has given compulsory retirement to 117 Group A officers and 126 Group B officers in the last 5 years. In a written reply in Rajya Sabha today, Minister of State for Personnel, Dr. Jitendra Singh said the provisions of Rule 56J of the Fundamental Rules and similar rules have been invoked against them. He said the services of 32,305 Group A and 82,205 Group B officers were reviewed during the period of July 2014 to October 2019. He said review of performance of government employees is a continuous process and the central government reviews officials on regular basis on grounds of performance and integrity. Minister of Law and Justice Ravi Shankar Prasad has said crimes against women have been dealt with on a priority basis by the judiciary. During question in the Rajya Sabha, he said an additional 102 fast-track courts are proposed to be established across India, specially to look into cases of crimes against women and children. Besides, he said 704 fast-track courts have already been established to look into heinous crimes. Minister of Communications Ravi Shankar Prasad has said there is no disruption of essential postal services in Jammu and Kashmir. Replying to a supplementary during question hour in the Rajya Sabha today, he said the delivery of over 4,000 passports and 2,940 other articles in Jammu and Kashmir during the month of August against all odds deserves appreciation. Replying to another question, the minister said though internet has emerged as an essential tool in everyday life, restrictions on the technology have been put in place in Jammu and Kashmir to check the spread of poisonous atmosphere that has been sought to be nourished by inimical forces. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Girish Chandra Murmu has said that synergy and coordination between the police and civil administration is vital for the development of the Union Territory. He said the J&K police have faced all the challenges very boldly to ensure a peaceful environment in the region. The Lieutenant Governor lauded the role of police and civil administration for their services during the Back to Village program aimed to provide governance at the people's doorstep. Mr. Murmu observed that the police and paramilitary forces have remained on the forefront to ensure smooth conduct of Panchayat and BDC elections. With that, we end this edition of Radio Newsreel. This program is produced and presented by the News Services Division of All India Radio.
not the will to win that matters. Everyone has that. It is the will to prepare to win that matters. जी हाँ, जीतने की चाह तो सबके अंदर होती है, लेकिन जीत की तैयारी से ही जीत मिलती है। कुछ ऐसी होती है खेल की दुनिया, जहां हर हार में जीत और हर जीत के साथ खिलाड़ी दूसरी जीत के पड़ाव के लिए एक नई शुरुआत करता है। दिन भर की तमाम खेल खबरों के साथ AIR FM गोल्ड पर हाजिर हूं मैं सिद्धार्थ सिंह, आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन को लेकर। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता। रजत जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। इससे पहले कि हम तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के 5वें दिन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से भारत तालिका में शीर्ष पर। दक्षिण एशियाई खेलों में अश्मिता चालिहा और गायत्री गोपीचंद ने अपने अपने मैच जीतकर बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर भारत के 2 और स्वर्ण किए पक्के। दक्षिण एशियाई खेलों में फुटबॉल में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 6-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 3 देशों के महिला जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। और सबसे बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के 5वें दिन भारतीय खिलाड़ियों की जीत का सफर जारी है। इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स और भूटान हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला कायम रखते हुए आज प्रतियोगिता के 5वें दिन भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। और दक्षिण एशियाई खेलों में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं पोखरा काठमांडू का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजकुमार। उनसे लाइव बात करते हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? सिद्धार्थ, देखिए, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही कामयाबी का दिन रहा। सबसे पहले अगर मैं जो पदक तालिका बताऊं तो अब तक भारत 118 पदक जीत चुका है। 58 स्वर्ण पदक है, 41 रजत पदक है और 19 कांस्य पदक है। लेकिन मैं जिस चीज को खास तौर पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि आज महिलाओं का दिन रहा। आज भारतीय महिलाओं ने हर प्रतियोगिता में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आज जो भारत ने 24 स्वर्ण पदक जीते, उसमें से 16 स्वर्ण सिर्फ महिलाओं ने जीते। 18 जो रजत थे उसमें से 6 रजत महिलाओं ने जीते और 2 कांस्य पदक। कुल भारत में जो आज 48 पदक जीते, उसमें से 24 पदक हमारी महिलाओं हासिल किए थे। आज जो मुख्य मुकाबले थे सिद्धार्थ, उसमें वुशु, भारोत्तोलन, तैराकी, निशानेबाजी और ताइक्वांडो, इन खेलों में भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। जी, तो अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो 5 स्वर्ण पदक हमें आज वुशु में मिले और 1 कांस्य पदक। पूरा सारे 6 के 6 पदक महिलाओं ने हासिल किए। इसी तरह तैराकी और भारोत्तोलन का पहला दिन था सिद्धार्थ। तो तैराकी में आज भारत ने कुल हम लोगों ने 11 पदक जीते, उसमें 4 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक था। इसी तरह वेटलिफ्टिंग, भारोत्तोलन की अगर हम बात करें तो आज भारतीय वेटलिफ्टर्स के बहुत शानदार प्रदर्शन किया और भारत को भारोत्तोलन में 4 स्वर्ण पदक हासिल किए। ताइक्वांडो का आज आखिरी दिन का सिद्धार्थ और भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हालांकि महिलाएं बहुत बेहतर रही। महिलाओं ने 3 स्वर्ण पदक जीते और 2 रजत पदक जो थे वो भारतीय पुरुष खिलाड़ियों के नाम हुए। दोनों का फाइनल में बहुत रोमांचक था सिद्धार्थ। यहाँ पर जो पहला पुरुष फाइनल था वो भारत और पाकिस्तान के बीच था। शुरू में भारतीय जो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे वो बहुत अच्छी तरह लिए हुए थे, लेकिन अंत में आते आते बाजी पलट गई और पाकिस्तानी जो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे वो जीते। इसी तरह दूसरा मुकाबला जो था वो नेपाल के खिलाड़ी के साथ था। उसमें भी शुरुआत में भारतीय जो ताइक्वांडो खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में विजयी मेजबान देश के किनारे गए तो हमें 2 रजत मिलते ताइक्वांडो में और 3 स्वर्ण। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे इस टूर्नामेंट पे आप नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में रजत सेन गुप्ता हमारे आज के स्पोर्ट्स पर मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। राजकुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत वैसे तो विश्व स्तर पर एथलेटिक्स में भी अच्छा कर रहा है और वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इनमें भी उनका बहुत अच्छा दबदबा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो 7 दक्षिण एशियाई देश हैं, इनमें और भी मेडल्स इन मुकाबलों में भारत के खिलाड़ी जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए भारतीय खिलाड़ी के मुख्य मुकाबले हैं। अब जैसे बैडमिंटन की हम बात करें तो बास्केटबॉल के मुकाबले शुरू हो गए, वेट लिफ्टिंग है, तैराकी है, निशानेबाजी है, इन प्रतियोगी बल्कि जो टेनिस है,
टेनिस में अभी मुकाबले शुरू होंगे, तो भारतीय, मुझे लगता है भारतीय पदक तालिका काफी आगे जाएगी। अभी तो 118 का आंकड़ा पार किया है, तो मुझे लगता है कि 150 से और अधिक, करीब 150 के आसपास मेडल भारत के हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुख्य मुकाबले हैं। निशानेबाजी में भी भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात थी कि 50 मीटर की ट्रिपल पोजिशन जो महिलाओं का वर्ग था, उसमें तीनों स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक भारतीय निशानेबाजों ने जीते। तो कुल मिला के भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, क्योंकि दक्षिण एशिया की भारत एक बड़ी खेल शक्ति है ना, दक्षिण एशिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है उसके अनुकूल हमारे खिलाड़ी यहाँ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो अगले 5 दिन है उसमें भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है वो बरकरार रहेगा। और इसे हम, मैंने जितने खिलाड़ियों से बात की है, इसे हम मान सकते हैं कि जो अगले साल 2020 टोक्यो ओलंपिक होने हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी का मंच मिला है। और खिलाड़ी उम्मीद करते हैं कि अगले साल ओलंपिक्स में भी भारत का परचम लहराएंगे। राजकुमार जी, वहाँ का मौसम तो बहुत ही सुहाना है, क्योंकि ऐसा हमें जैसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और मैक्सिमम जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और इसलिए इन मुकाबलों में एक नई तेजी और तरोताजगी देखने को मिल रही होगी वहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुबह शाम की थोड़ी ठंड रहती है, लेकिन दिन में जो खासकर जब धूप निकल आती है तो मौसम बहुत बढ़िया रहता है, खिलाड़ियों के अनुकूल है। हालांकि थोड़ी कुछ मुकाबले कल, जैसे मेरी कुछ खिलाड़ियों से बात हो रही थी, तो कुछ मुकाबले जो थोड़े सुबह 9 बजे के करीब शुरू हो गए हैं, उनको लेकर थोड़े खिलाड़ियों में ये भावना थी कि अगर थोड़ी देर क्योंकि ठंड होती है, खासकर जो कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ये जो कि ठंड के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन कुल मिला के जैसे आपने कहा, बहुत सुहावना यहाँ पर मौसम है और खिलाड़ी भी उस मौसम के अनुकूल बहुत सुहावना, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे भी अगले 5 दिन में जो दक्षिण एशिया का खेल महाकुंभ है, इसमें और जैसे जैसे अभी ये परवान चढ़ता जा रहा है, तो भारतीय खिलाड़ियों का उसमें प्रदर्शन और बेहतर होगा। राजकुमार जी, आखिरी सवाल और एक छोटा सा संक्षेप में आपका जवाब मैं अपेक्षित कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत जो है ये 7 देशों की इन प्रतियोगिताओं में 13वीं बार इस बार खेल रहा है, और 12वीं बार वो 12 बार उन्होंने जो बेस्ट है वो हासिल किया है। हमेशा से वो अग्रणी रहे हैं, शीर्ष पर रहे हैं। इस बार भारत के लिए लक्ष्य क्या है? बिल्कुल, लक्ष्य है कि भारत तो निश्चित तौर पर आज के बाद भारत तो पदक तालिका में और बाकी जो देश है उनकी बहुत आगे निकल गया है। हालांकि नेपाल कल तक बहुत आगे है, लेकिन नेपाल को छोड़कर भारत और नेपाल का जो अंतर है पदकों का काफी बढ़ गया है, और उम्मीद है कि अब अगले 5 दिन में ये अंतर और बढ़ेगा। नेपाल ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, अब तक उन्होंने सबसे ज्यादा 31 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन अब आज उन्होंने उस 31 के आंकड़े को पार कर लिया है। और साथ ही नेपाल ने यहाँ अब तक जितने दक्षिण एशियाई खेल हुए उसमें 100 स्वर्ण पदकों का आंकड़ा भी कल पार किया था। तो नेपाल के लिए भी निश्चित तौर पर ऐतिहासिक खेल है। जी धन्यवाद राजकुमार जी। राजकुमार जी, स्पोर्ट्स कैन के बहुत सारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं की ओर से आपका धन्यवाद, और आपकी जो अपडेट है आप पूरी तरह से इस पूरे इवेंट पे नज़र बनाए हुए हैं, तो आपसे हम कल भी इसी तरह से पूरी जानकारी अपने सुनने वालों को देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग ने जिस तरह से ये सारी बातें करी, और अभी जो फाइनल हमारे पास पदक तालिका का आंकड़ा है कि 58 स्वर्ण, 41 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 118 पदकों के साथ भारत शीर्ष पर है। मेजबान नेपाल दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। और एक थोड़ा सा जैसे भारोत्तोलन के लिए हमारे लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा, 4 स्वर्ण हमने जीते। एथलेटिक्स में हमारा बहुत अच्छा दिन रहा, जिसमें हमने अगर ट्रिपल जंप की अगर हम बात करें तो उसमें भारत के कार्तिक उन्निक्री ने स्वर्ण और मोहम्मद सालू ने रजत पदक जीता। इसी स्पर्धा में महिला वर्ग में भी भैराबी रॉय ने कांस्य पदक हासिल किया, और महिलाओं की ट्रिपल जंप की अगर हम बात करें तो कुन्नी करीरथी ने स्वर्ण देश के नाम किया। जी देखिए, भारत एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है, और न सिर्फ साउथ एशियन गेम्स में बल्कि जितने भी और प्रतियोगिताएं होती रही हैं, एशियाई खेल हों या ओलंपिक्स हो, उसमें भी भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। ये बात और है कि अब एथलेटिक्स में बहुत कुछ करने को बाकी है, जो कि अगली बार जो ये मैच खेल होंगे टोक्यो में, तो वो जो एशिया जो ओलंपिक्स होंगे उसमें भारत को करने के लिए बहुत कुछ
है और उसमें ये दिखाना पड़ेगा भारत को कि वो विश्व के जो बेहतरीन स्पोर्टिंग नेशंस हैं उनमें भी अपना स्थान पक्का करता है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन खेलों का सवाल है, ये 13वीं बार इस बार आयोजित किए जा रहे हैं और अब तक 12 दफे भारत जो है शीर्ष पर रहा है। तो इसमें एक सोचने की बात यही आ रही है कि जो दूसरे देश हैं उनसे मुकाबले में और आगे कितना जा सकते हैं भारतीय खिलाड़ी, ये तो अभी 10 तारीख तक पता चलेगा। जी बिल्कुल। आप मेडल टैली में भी रजत जी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे इतना ऑलमोस्ट जो है हम देख सकते हैं कि काफी 20 से भी ज्यादा पदकों का डिफरेंस है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि जिस तरह की आपने जो एक बहुत अलग हट के खेलों से आपने जिस तरह से एक बॉन्डिंग की बात कुछ देर पहले करी थी कि खिलाड़ी जब इस तरह के माहौल में मिलते हैं, खेलते हैं, तो एक अलग तरह का उनको एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपोजर मिलता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और आज एक जो खेल जिसके बारे में बात करना जरूरी है वो है बैडमिंटन, जिसमें अश्मिता चालिहा और गायत्री गोपीचंद ने अपने अपने मैच जीतकर महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया और ये दोनों ही एक दूसरे के सामने होंगे महिला जी फाइनल में। तो कल ऐसे बहुत सारे मुकाबले देखने को मिलेंगे। और पुरुष सिंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। आर्यमन टंडन और सिरिल वर्मा ने फाइनल में प्रवेश करके भारत के लिए स्वर्ण पदक ऑलरेडी पक्का कर लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिरिल ने श्रीलंका के दिनुका करुणारत्ने को 21-9, 21-12 से, जबकि आर्यमन ने नेपाल के दूसरी वरीयता प्राप्त रतनजीत तमांग को 21-18, 14-21, 21-18 से हराया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो मैच था जो सिरिल ने जिस तरीके से 21-9 और 21-12 से जीता, तो ऑलमोस्ट मतलब काफी दबदबा अपना कायम रखा। निश्चित ही आर्यमन ने 21-18, 14-21 और 21-18 से जीता है। तो जहां तक सिरिल वर्मा की बात है, उन्होंने थोड़ी आसानी से जीत हासिल की, लेकिन 3 गेम्स खेलने पड़े आर्यमन टंडन को जीत दर्ज करने के लिए, क्योंकि जो इनके साथ सामने जो खेल रहे थे रत्नजीत तमांग जी, वो सेकंड सीड थे इस मुकाबले में। तो इस तरह से ये परेशानी तो थोड़ी सी आई जरूर, लेकिन आर्यमन टंडन उसके बाहर आ गए और अब सिरिल वर्मा और आर्यमन टंडन के बीच में गोल्ड के लिए मैच होगा। और ये देखिए कि अच्छी बात यह है कि साउथ एशियन गेम्स में नए बच्चों को, नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। जैसे गायत्री गोपीचंद की बात कर लें, गोपीचंद की बेटी हैं, और दूसरी बात यह है कि केवल 16 वर्ष की आयु है अभी उनकी। तो इस तरह के एक्सपोजर से उनको निश्चित ही आगे चल करके बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल। और बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और बात करते हैं हॉकी की। कैनबरा में 3 देशों के महिला जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। मेजबान टीम ने 25वें मिनट में स्कोनेले कर्टनी के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन भारत ने 52वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर गगनदीप कौर के गोल से बराबरी हासिल कर ली। तो काफी अटैकिंग वो मोड पे थी इंडियन टीम और अच्छा मतलब इन्होंने प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली जब ड्रॉ हो जाता है, कोई रिजल्ट नहीं आता, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मायूसी रहती है। नहीं, देखिए कंपटीशन कैसा हो रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और सामने जो आपकी टीम है वो कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो कि विश्व की श्रेष्ठतम टीमों में से मानी जाती है। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला टीम भी। तो महिलाओं के वर्ग में और खासतौर पर ये जूनियर वर्ग में जो खेल हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि उसमें कौन ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, किस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि भारत की सीनियर टीम में आगे अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही खिलाड़ी आगे चल के सीनियर टीम में खेलेंगे। और अभी जो हम बात कर रहे थे एक्सपोजर की, तो एक बहुत बड़ा ये अवसर होता है खिलाड़ियों के लिए। और चलते चलते एक खबर पे और नजर डाल लेते हैं। ग्लासगो में यूरोपीय शॉर्ट कोर्स तैराकी चैंपियनशिप में हंगरी की कातिंका होसजू ने 60वां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक और करियर का 90वां अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत लिया है। आयरन लेडी के नाम से मशहूर होसजू ने 400 मीटर मेडले में 4 मिनट 25.10 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। और श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आपसे कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रजत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। इसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे देश दुनिया के समाचार संध्या में। तो दीजिए इजाजत सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार, शुभ रात्रि।
नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में बदलाव किए बिना इसे 5.15% पर ही रखा। 2019-20 के लिए संशोधित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 5% तक रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कारपोरेट कर में कटौती अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कारगर उपाय। कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के उपचुनाव में 66% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। शनिवार को होने वाले मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जलाने की घटना की कड़ी निंदा की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। और दक्षिणी एशियाई खेलों में भारत की जीत का सिलसिला जारी, 54 स्वर्ण सहित 114 पदक हासिल किए। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 5.15% पर ही बनी रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्विरोध समर्थन किया। रिवर्स रेपो दर 4.90% और बैंक दर 5.40% बनी रहेगी। समिति ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अंदर बनाए रखने के साथ नीतिगत दरों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया जब तक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकार अगले बजट में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई कदम उठा सकती है। It is also likely that the government may initiate some more counter-cyclical fiscal and other measures to arrest the slowdown. The forthcoming union budget will provide greater clarity on all these aspects. रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। ये इस वर्ष की 5वीं बैठक थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि वो प्राथमिक शहरी कोऑपरेटिव बैंकों यूसीबी के लिए नियमन संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये दिशा निर्देश प्रमुख रूप से एकाकी और सामूहिक आपस में संबद्ध ऋण लेने वालों के लिए लागू मानकों और वित्तीय समावेश तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने से जुड़े होंगे। राज्यसभा ने कराधान कानून संशोधन विधेयक 2019 को मंजूर कर लोकसभा को लौटा दिया है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कारपोरेट कर में कटौती अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक में अध्यादेश से अधिक प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने इन आरोपों का खंडन किया कि बड़ी कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विधेयक में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट कर में रियायत का लाभ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों सहित कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियों को मिलेगा। अर्थव्यवस्था को खराब बताए जाने को नकारते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के सख्त और लगातार प्रयासों के कारण फंसा हुआ कर्ज 10 लाख करोड़ रुपए से कम होकर 8 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार पूरी तरह से समाज के गरीब वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों के लिए हैं। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि कराधान के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश और वित्त मंत्री द्वारा पेश विधेयक में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि कंपनी करों में कटौती से अर्थव्यवस्था की ढांचागत समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों के उपचुनाव में 66% से अधिक मतदान होने की खबर है। चिकबलपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 80% वोट डाले गए। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में सबसे कम लगभग 41% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्वक हुआ। इस बीच कर्नाटक से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केसी राममूर्ति निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर राज्यसभा की सीट से भी त्यागपत्र दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे।
झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 7 जिलों में 20 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन स्टार प्रचारकों और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार के दौरान विभिन्न पार्टियों ने कई मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्धता, आरक्षण और रोजगार के मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव प्रचार के दौरान छाए रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रमुखता से विकास, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC, राम जन्मभूमि अयोध्या मामला, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक के मुद्दों को प्रचार के दौरान उठाया। दूसरी तरफ कांग्रेस और झारखंड की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने इस चरण में जनजातीय अधिकारों, बेरोजगारी, निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठाया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। ये चरण भी हम लोग के लिए एक चैलेंजिंग चरण है, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के काफी अफेक्टेड जिले हैं, जैसे कि चाईबासा, खूंटी, सरायकेला, इवन रांची का भी जो पार्ट हो रहा है, तमाड़, तो ये सभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से काफी अफेक्टेड है। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल अथवा जिला बल उपलब्ध रहेंगे। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा के चुनाव 5 चरणों में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक कराए जा रहे हैं। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाने की घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भोजनावकाश के बाद सभापति M वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से घटना का पूरा विवरण देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ये संदेश देने की आवश्यकता है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। Condemns the incident. Needed is not mere arrest in one case. As everybody said, we must send out a signal to the entire country, to the society, that in such incidents the action should be taken promptly, swiftly, adequately, so that the things cannot be repeated once again. इससे पहले समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। कांग्रेस की विप्लव ठाकुर ने कहा कि ये घटना समाज पर धब्बा है और सोचने की जरूरत है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चौहान ने कहा कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को नहीं बल्कि महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कांता कर्दन ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पीड़िता के परिवार के साथ है। इस बीच उन्नाव जिले की दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए विमान से दिल्ली लाया गया है। आज सवेरे 5 लोगों ने उसे जलाकर मारने का प्रयास किया था। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के तुरंत बाद उन्नाव जिला अस्पताल में इलाज के बाद पीड़िता को लखनऊ के अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो लगभग 90% जल चुकी है। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया। राज्य सरकार ने पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और पुलिस महानिरीक्षक तथा आयुक्त से मामले की रिपोर्ट देने को कहा है। ये घटना जिले के बिहार क्षेत्र में हुई। जमानत पर जेल से बाहर आए आरोपियों ने गांव के बाहर खेत में महिला पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जलाकर मारने की कोशिश की। पीड़िता ने इस वर्ष मार्च में इन आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से भारतीय अपराध संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बदलाव के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। सूत्रों के अनुसार आपराधिक कानून में बदलाव कर बनाए जाने वाले नए कानून नागरिक केंद्रित होंगे, आधुनिक लोकतंत्र की आकांक्षाओं को दर्शाएंगे और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराएंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले पर टिप्पणी कर उच्चतम न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर पिछले 105 दिन केस के चलते जेल में रहना पड़ा। बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आप केस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन चिदम्बरम जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि माय रिकॉर्ड एज मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। यही तो आरोप है
कि मंत्री पद का कर्तव्य निभाते हुए आपने भ्रष्टाचार किया, यही तो केस है। श्री जावड़ेकर ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार की आलोचना के लिए श्री चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के शासनकाल में मुद्रास्फीति की दर अधिक थी और विकास दर कम थी। इससे पहले श्री चिदम्बरम ने देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक ऋण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रतुल पुरी द्वारा दिल्ली की एक अदालत में दायर जमानत याचिका का विरोध किया है। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को बताया कि यदि उसे राहत दी गई तो अभियुक्त सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। अदालत इस मामले में कल आगे की सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने आज बताया कि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियोग के आरोप का मसौदा तैयार कर रही है। कल 3 कानूनविदों ने सदन की न्यायिक समिति में गवाही देकर कहा था कि श्री ट्रंप ने यूक्रेन को ट्रंप के विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार के खिलाफ जांच करवाने की कोशिश की थी, जो महाभियोग के लिए ठोस आधार है। कानूनविदों के इस रुख से डेमोक्रेटिक पार्टी को बल मिला है। लोकसभा में आज कई सदस्यों ने विभिन्न कारणों से फसल को हुए नुकसान तथा किसानों पर इनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। इस मुद्दे पर सदन में नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने कृषि क्षेत्र की मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों का उल्लेख किया। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने सिंचाई सुविधा में विस्तार का सुझाव दिया। बीजू जनता दल के भृतहरि ने सरकार से न केवल भूस्वामी किसानों को बल्कि कृषि मजदूरों को भी वित्तीय सहायता देने की मांग की। कई सदस्यों ने मनुष्य और पशुओं के बीच टकराव के कारण फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। देश में इस वर्ष अक्टूबर तक ग्रिड से जुड़ी लगभग 31,700 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। वर्ष 2022 तक 1 लाख मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 8,000 मेगावाट है। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में 3रे राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जैम गति, कौशल और पैमाने का प्रतीक है, जो ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जैम का आधार खुलापन, निष्पक्षता तथा समावेशन है और ये वास्तव में एक पारदर्शी ई मार्केट प्लस है। नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के 5वें दिन भारतीय खिलाड़ियों की जीत का सफर जारी है। भारत ने आज कुल 48 पदक जीते हैं, जिनमें 24 स्वर्ण, 18 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक देश के नाम किए। भारतीय खिलाड़ियों ने वुशु, वेटलिफ्टिंग, तैराकी, निशानेबाजी और ताइक्वांडो में शानदार प्रदर्शन किया। वुशु में भारत ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। तैराकी में भारत ने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। भारोत्तोलन में पहले दिन भारत ने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। शूटिंग में भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। ताइक्वांडो में भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। एथलेटिक्स में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में 58 स्वर्ण, 41 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 118 पदकों के साथ भारत शीर्ष पर है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 17 अंक गिरकर 40,780 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 25 अंक घटकर 12,018 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में बदलाव किए बिना इसे 5.15% पर ही रखा। 2019-20 के लिए संशोधित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 5% तक रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कारपोरेट कर में कटौती अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कारगर उपाय। कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के उपचुनाव में 66% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। शनिवार को होने वाले मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जलाने की घटना की कड़ी निंदा की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का मसौदा तैयार किया और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत की जीत का सिलसिला जारी, 58 स्वर्ण सहित 118 पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening. This is All India Radio and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Reserve Bank keeps repo rate unchanged at 5.15%, revises GDP growth forecast to 5% for 2019-20. Finance Minister Nirmala Sitharaman says slashing corporate tax is an effective reform to attract more investments. Over 66% polling recorded for 15 Karnataka Assembly by-elections. Campaigning for second phase of Jharkhand Assembly election ended this evening. Elaborate security arrangements in place for voting on Saturday. Rajya Sabha condemns setting on fire Unnao rape survivor in Uttar Pradesh, calls for stringent action against culprits. US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi orders drafting of impeachment articles against President Trump. And in South Asian Games, India continues its winning streak, bags 118 medals including 58 gold. The Reserve Bank of India, RBI, in its fifth bi-monthly monetary policy has kept the policy repo rate unchanged at 5.15%. The six-member Monetary Policy Committee, headed by Governor Shaktikanta Das, voted unanimously for a status quo policy. The reverse credit policy has also maintained the reverse repo rate at 4.9% and the marginal standing facility rate and bank rate at 5.4%. Real GDP growth for 2019-20 has been revised downwards from 6.1% to 5%. Interacting with media, RBI Governor Shaktikanta Das said the decisions are in consonance with the objective of achieving the medium-term target for consumer price index inflation of 4% while supporting growth. It is also likely that the government may initiate some more counter-cyclical fiscal and other measures to arrest the slowdown. The forthcoming union budget will provide greater clarity on all these aspects. At this critical juncture, it is of paramount importance that monetary policy and fiscal policy continue to work in coordination to achieve the best results in the national endeavor to revive growth. Meanwhile, the equity benchmarks today closed lower in volatile trade after the Reserve Bank left interest rates unchanged. However, the rupee appreciated 24 paise to 71 rupees and 29 paise against the US dollar. Sensex at the Bombay Stock Exchange settled 71 points down at 40,780. Nifty at the National Stock Exchange also slipped 25 points to close at 12,018. The Rajya Sabha has returned the Taxation Laws Amendment Bill 2019 after approving it as passed by the Lok Sabha. Replying to the discussion in the upper house, Finance Minister Nirmala Sitharaman said slashing the corporate tax remains an effective reform measure to attract more investments. She said the amendments in the taxation laws as envisaged in the bill have more provisions and clarifications than the ordinance that was promulgated earlier. The minister rebutted allegations that the amendments are aimed at helping big corporates and said the corporate tax rebates as provided for are applicable to all the companies registered under the Companies Act, including the MSMEs. Ms. Sitharaman clarified that the new tax rebate is extended to only new companies so as to attract fresh investments to the country. In Karnataka, the polling for by-election to 15 assembly segments has been completed peacefully. However, a few cases of EVM malfunction and voters not finding their names in the electoral rolls were reported during the voting process.
As per the latest figures on the voters' turnout, an average of over 66.25% was reported in all the 15 constituencies. Chikaballapur Assembly segment recorded the highest of 79.8 poll percentage, and Shivaji Nagar in Bengaluru recorded the lowest of 41.13%. Counting of votes will be taken up on the 9th of December. More from our correspondent. The fortune of 165 candidates is locked inside EVMs kept in 4,185 polling booths. The EVMs and VVPATs are moved to strong rooms near 11 counting centers. During the election today, BJP has filed a complaint with State Electoral Office against Jewargi Congress MLA Ajay Singh for influencing voters in Shivaji Nagar today. Congress has also filed another complaint against Yellapur, KR-Pura and Yeshwantpur BJP candidates for their supporters allegedly distributing cash among the voters. Sudhindra, AIR News, Bengaluru. In Jharkhand, campaigning for the second phase of assembly elections ended this evening. 20 assembly constituencies spread over 7 districts will go to the polls in this phase on Saturday. 260 candidates, including 29 women, are in the fray in this phase. Chief Electoral Officer of Jharkhand, Vinay Kumar Chaubey, has said that elaborate security arrangements are being made as these areas are extremist infested. ये चरण भी हम लोग के लिए एक चैलेंजिंग चरण है, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के काफी अफेक्टेड जिले हैं, जैसे कि चाईबासा, खूंटी, सरायकेला, इवन रांची का भी जो पार्ट हो रहा है, तमाड़, तो ये सभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से काफी अफेक्टेड है। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल अथवा जिला बल उपलब्ध रहेंगे। 155 मतदान केंद्रों के अपने जो मतदान कर्मी हैं उनको हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके मतदान केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें से 125 तो चाईबासा में ही है और शेष जो है वो सरायकेला और खूंटी जिला में है। Chief Minister Raghubar Das, State Cabinet Minister Neelkant Singh Munda, State BJP Chief Lakshman Gilua, Rebel BJP leader Saryu Roy, JDU State President Salkhan Murmu and National Spokesperson of Congress Gaurav Vallabh are prominent candidates in this phase. Our correspondent takes a look at the election scenario. Commitment towards protection of rights of tribal people over water, forest and land, issues of reservations and employment remain dominated during this phase in election campaign of all political parties. Senior leaders of BJP prominently raised the issue of development, National Citizenship Register, Ram Janmabhoomi Ayodhya case, Article 370, Triple Talaq during their poll campaigns. On the other hand, issues of tribal rights, education and employment, reservation in private sector reflected in election rallies of Congress and other regional parties. Dharmendra Kumar Rai, AIR News, Ranchi. The Rajya Sabha has condemned the incident of setting on fire the rape survivor in Unnao, Uttar Pradesh, and called for stringent action against the culprits. In the post-lunch session, Chairman M. Venkaiah Naidu said he has spoken to the Chief Secretary of Uttar Pradesh to get details of the incident. He said there is need to send out a signal that such heinous crimes against women will not be accepted and there should be swift action against the perpetrators. The entire House condemns the incident. Needed is not mere arrest in one case. As everybody said, we must send out a signal to the entire country, to the society, that in such incidents the action should be taken promptly, swiftly, adequately, so that the things cannot be repeated once again. And also appeal to the society to isolate such people and stand by the victims. The rape survivor has been airlifted to Delhi for better treatment. All 5 persons accused of setting ablaze the rape victim have been arrested. The incident took place in Bihar area of the district this morning when the accused, out on bail, attempted to burn the woman by dousing her with kerosene in the fields outside the village. The victim had filed a complaint of rape in March this year. Briefing media in Lucknow, IG Law Parveen Kumar said strict action will be ensured through fast-track investigation and prosecution. 5 व्यक्तियों का नाम बताया गया था। उन 5 व्यक्तियों की तत्परता से पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इस प्रकरण में जो भी वैज्ञानिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनको संकलन किया जा रहा है। The union government today said a total 31,696 megawatts of grid-connected solar power has been set up by the end of October this year in the country.
A target of 8,000 megawatt solar power capacity has been set for 2019-20. In a written reply in the Lok Sabha, New and Renewable Energy Minister R.K. Singh said the central government had set a target for deploying 20,000 megawatt of grid-connected solar power by 2022, which was later revised to 1 lakh megawatts in 2015. Union Minister for Law and Justice Ravi Shankar Prasad today said over 16 lakh cases are pending in the High Courts, while around 66 lakh cases are pending for 5 years or more in the district and subordinate courts in the country. In a written reply in the Rajya Sabha, Mr. Prasad said over 4,19,000 cases are pending in the Allahabad High Court, which is the highest among the High Courts. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates, visit our News on AIR app and follow us on Twitter at AIR News Alerts. You can also visit our website www.newsonair.com. In the United States House of Representatives, Speaker Nancy Pelosi today announced that the House is drafting articles of impeachment against President Donald Trump. In her announcement, Ms. Pelosi said the president has engaged in abuse of power, undermining our national security and jeopardizing the integrity of our elections. She said our democracy is what is at stake. She said the president has left them with no choice but to act. Democrats are charging to order a Christmas-time vote on removing the 45th president, a situation Ms. Pelosi hoped to avoid, but which now seems inevitable. President Trump is alleged to have abused the power of his office by putting personal political gain over national security interests. The BJP has criticized former Prime Minister and Congress leader Dr. Manmohan Singh for his remarks on the 1984 anti-Sikh riots. Speaking at an event to mark the 100th birth anniversary of former Prime Minister I.K. Gujral, Dr. Singh had said the 1984 anti-Sikh riots could have been avoided if the then Home Minister P.V. Narasimha Rao had heeded the suggestion of Mr. Gujral of calling in the army. Union Minister and senior BJP leader Prakash Zavadekar, while talking to reporters in New Delhi today, questioned that if Narasimha Rao was not an efficient Home Minister, why did Dr. Singh choose to become the Finance Minister in his government in 1991? Senior BJP leader and Union Minister Prakash Zavadekar today accused Congress leader P. Chidambaram of violating the Supreme Court's direction by making comments on the ongoing corruption case against him. Briefing reporters outside Parliament, Mr. Zavadekar hit out at the Congress leader for criticizing the government over the economic situation, saying during the UPA rule, inflation was high and growth rate was low. भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर पिछले 105 दिन केस के चलते जेल में रहना पड़ा। बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आप केस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन चिदम्बरम जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि माय रिकॉर्ड एज मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। यही तो आरोप है कि मंत्री पद का कर्तव्य निभाते हुए आपने भ्रष्टाचार किया, यही तो केस है। Earlier briefing media in New Delhi, Mr. Chidambaram expressed concern over the slowdown in the country's economy. A special court in Mumbai today declared Nirav Modi a fugitive economic offender. The key accused in the Punjab National Bank fraud case was declared fugitive on a plea of the Enforcement Directorate. Nirav Modi and his uncle Mehul Choksi are the prime accused in the PNB fraud case related to alleged fraudulent issuance of letters of undertaking that caused a loss of over $2 billion to the public sector bank. The 15th Finance Commission has submitted its report for 2020-21 to President Ramnath Kovind. Chairman of the Commission N.K. Singh, members Ajay Narayan Jha, Ashok Lahiri, Ramesh Chand, Anup Singh and Secretary Arvind Mehta today called on the President and submitted the report for further necessary action. Indian athletes excelled at the 13th South Asian Games in Nepal and grabbed 48 medals comprising 24 gold, 18 silver and 6 bronze today. Indian women displayed their power and clinched 16 gold, 6 silver and 2 bronze for the country. On the 5th day of the Games, India further consolidated its top position in the medal tally with a total of 118 medals comprising 58 gold, 41 silver and 19 bronze.
And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Reserve Bank keeps repo rate unchanged at 5.15%, revises GDP growth forecast to 5% for 2019-20. Finance Minister Nirmala Sitharaman says slashing corporate tax is an effective reform to attract more investments. Over 66% polling recorded for 15 Karnataka Assembly by-elections. Campaigning for second phase of Jharkhand Assembly election ended this evening. Rajya Sabha condemns setting on fire Unnao rape survivor in Uttar Pradesh, calls for stringent action against culprits. U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi orders drafting of impeachment articles against President Trump. And that is all in the news at 9. Good night. सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवा पर आप सभी का स्वागत है। गाता एक राम भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती एफएम के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद डीटीएच सेवा के साथ। आज की ताजा देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी डीटीएच के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप। बस डीटीएच सेवा का उठाए लाभ। आपकी हर सांस के साथ साथ डीटीएच सेवा 24 घंटे रहे आपके पास। डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, डीटीएच सेवा है जहां। This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring a discussion on Personal Data Protection Bill. The participants are Pavan Duggal, cyber expert, and Prasoon Srivastav, journalist. Mr. Pavan Duggal, can you explain why Personal Data Protection Bill is important in Indian context? In India, we have traditionally emerged from historical past where joint family systems were the prevalent norm. Therefore, sharing of data was the default and de facto option. It's only when the internet got introduced commercially in the country in 1995 and as maturity and internet adoption started growing, we began to start seeing an increasing sensitivity amongst Indian internet users that they need to protect their own data. So even when the Information Technology Act 2000 was passed, data protection was not a thrust area or a priority, nor was cybersecurity. By the time we had come to 2008 and the Mumbai attacks, we found that the amendments to the IT Act did come up with some lip service provisions on cybersecurity, and only a couple of them pertained to protection of sensitive personal data. Of course, at that point of time, if you would violate somebody's sensitive personal data, and that would cause loss to someone, you could be exposed to unlimited damages by way of compensation. In 2011, the Government of India notified the Information Technology Rules 2011, which mandated various parameters of due diligence to be followed by companies who are dealing, handling or processing sensitive personal data. But by and large, India all these years lacked a dedicated data protection legal regime. Of course, the IT Act was being sought to be resorted to, but IT Act was not a data protection law, and consequently, the absence of effective legal provisions always was at the back of the mind of the lawmakers. So when Justice Sri Krishna Committee gave its report, giving us the way forward in terms of the parameters which need to be kept in mind for a data protection legal regime in the country, the government introduced for public comments the proposed Personal Data Protection Bill. Meanwhile, with the Supreme Court declaring in a unanimous voice that we all have a fundamental right to privacy under Article 21 of the Constitution, the need for having in place such strong data protection provisions became even more imminent. In that context now, this Personal Data Protection Bill 2019 has been approved by the Cabinet and is going to the Parliament. I personally believe that once this particular law is passed by Parliament, it's going to herald a new dawn, a new era where now Indians as well as companies who are targeting Indian markets will increasingly have to comply with stringent legal provisions so that the personal data, sensitive data and critical data of individuals, including their personally identifiable data, could be adequately protected, preserved, so that people's right to privacy is not impacted in any manner whatsoever. So in Indian context, how important is this particular Personal Data Protection Bill? I believe in the Indian context, there was already a vacuum in terms of
not having in place an adequate legal framework for data protection. This vacuum has been sought to be filled up by the Personal Data Protection Bill. The very fact that it's classifying different kinds of data, including general data, sensitive data and critical data, and the very fact that this particular legal provision is mandating that certain portions of sensitive data does not need to leave the territorial boundaries of the country, it's only basically showing us one direction, that the government of the country has woken up to the immense power of the Indian data. The big data that Indians cumulatively are generating as global authors, global transmitters and global broadcasters of data is having humongous amount of powers which can be channelized for protecting and preserving the cyber sovereignty of Indian nation. And in order to do so, the government has now come up with a legal framework. This legal framework is defining the rights, duties and responsibilities of various stakeholders in this data-driven ecosystem. Because as the Honorable Prime Minister says, data is not just the new oil, it's the new gold of the new data economy. And having said that, it's the bounden duty of any sovereign government to go ahead and protect such data, which is going to be the foundation of the data-driven electronic economies. And that's what the government is seeking to do. So it's a very welcome move. It opens up a new doors of evolving new legal jurisprudence on data protection, because data protection as a legal concept has been missing in the country, and therefore there's a need now for coming up with strong jurisprudential growth trends in data protection in India. So one thing I would like to understand from you, practice in Supreme Court also, government brought some privacy provisions in IT Act. Why in information technology these provisions were brought? Are there provisions around privacy, IPC and CRPC? Look, by the time we had enacted the IT Act in the year 2000, protecting privacy or data protection was not a priority. So we did not get to see anything there. But in the 2008 amendments, the focus was on protecting privacy, so we made it an offence when someone would take private pictures of your private parts, which will be invading or infringing your privacy as an offence. We also made it a point to say that, look, in case if any company is negligent in dealing, handling or processing sensitive personal data of any person, as a result of such negligence, any person suffers damage, then he can actually claim unlimited damages by way of compensation. It's a different matter altogether that not many compensation awards have been made from 2008 till now, but the vacuum was long existing. And today, when an Indian user is online, he may be most negligent, but he has this expectation that the government will come to his rescue once he finds that his data is being unauthorizedly used or accessed by any third parties, including service providers. So the people were looking up to the government to show us the way on how the data in India can be adequately protected. And I believe that this Personal Data Protection Bill is a step in that direction. It's not necessarily the best step, but as you said, Rome was never built in one day. This is the first step of an evolving new jurisprudence on data protection, which India is likely to see in the next couple of decades. But unlike a policy, it is coming as a bill which will be passed by Parliament. How easy would it be to modify the provisions of the bill if required? The government already has the numbers to have this bill passed in Parliament, and once it's so done, it becomes an act of Parliament which can only be amended by another subsequent amendment to be passed by Parliament. The logical, correct approach is to just come up with broad generic provisions and leave a lot of secondary legislation powers to the government so that the government can make appropriate rules and regulations. This is the methodology that was adopted in the Information Technology Act 2000, and I expect that the same methodology is likely to be replicated in the Personal Data Protection Bill, because it's going to be very, very difficult to go every now and then to Parliament and get any bill either modified or amended in any manner. So the focus, I believe, in this Personal Data Protection Bill will be on rules and regulations. They're already talking of a Data Protection Authority that will be given the discretion to come up with appropriate rules, regulations, guidelines, and I think those will effectively start addressing the day-to-day concerns of various stakeholders. So it's a flexibility that's inbuilt in the legislation that I believe is going to be a strong hallmark of this Personal Data Protection Bill 2019. There is a lot of focus on storage of data, like where the data should be stored. Now government, as we read in the news, government has come up that critical data has to be mandatorily stored within the country, and critical data will be defined by government from time to time. Sensitive data they have identified as financial data, health data, then sexual orientation of a person, then political or religious orientation. These are the things that they have defined in sensitive data, and they have said that based on explicit consent of the data owner, this can be stored abroad. So why so much of thrust on data storage, and why this differentiation do you think should come in the legislation?
India has suddenly woken up to the ground reality that majority of data of Indians has already gone outside India and is being monetized by a large number of these social media companies who are exploiting the same to the hilt. So the government woke up to the power of the Indian data, which could be used for purposes of fueling and further growing cyber sovereignty. That's why the focus on data localization has come. Way back in April 2018, the Reserve Bank of India had mandated through a circular that all data of banking systems of Indians must be physically located in India. Now, those elements of data localization should have found mention in the proposed bill, and that's what the reports are currently suggesting. However, it's already beginning to show that the stand that was taken by the Reserve Bank of India in terms of insisting on banking data not going outside the country is being sought to be diluted in the Personal Data Protection Bill, which I think may not be a correct move in the right direction, because you cannot have two wings of the same government talking in two different verticals or two different directions, because banking data has been made as a part of sensitive data, which it's been reported under the proposed bill could be taken out, would run contra to what the RBI has been insisting all these days. So I think a harmonious balance will have to be obtained, and also by leaving it to the Data Protection Authority to determine what's critical information or critical data, I think it's also, while it's futuristic, while it is more pragmatic, but it's also leaving a lot of uncertainty. I believe people require certainty, and these issues like critical data ought to have been defined in the law itself, rather than leaving it to the subjective discretion of a statutory authority who may want to define it in a secondary legislation. Also, there are some intrinsic defects. The legislation which is passed by Parliament is a mother legislation that must define all the critical or important crucial concepts which are relied upon in a legislation. By leaving it to a secondary statutory authority to go ahead and define what's going to be critical data could potentially be opening up a Pandora's box of legal problems and challenges apart from legal challenges in a court of law. So it'll be interesting to see how things actually move, but it's going to be a mixed bag. Come the day when this law is going to be implemented, we should not expect that we are pushing a button and next day onward things will be hunky-dory. I see an interregnum period where there will be a lot of legal challenges, things will need to be sorted out, these small intricacies will have to be ironed out so that there's substantial clarity to all data subjects and all data fiduciaries and responsibilities holders as to how they have to deal with this kind of data. So a lot of cases are going to come for lawyers like you in coming days. Well, the PDP bill should of course see increased litigation in the country as well. So there has been penalty provision also. The government has proposed jail term of 3 years if someone is knowingly committing any violation under the act, and also they have proposed 15 crore penalty or 4% of the global turnover in case of major violations. How do you think this will discourage companies from misusing data, or what kind of effect this will have on the internet ecosystem? The provisions for damages up to 15 crores appear to be more inspired by the provisions of the General Data Protection Regulation. But it's not about having in place stringent fines. It's more about enforcement. You may have the most stringent fines, but if they're not going to be enforced, it's not going to have a salutary deterrent effect. So it'll be very important for India to give a message to all data fiduciaries that look, India is serious about protecting data. And if you're going to be negligent, then we will straddle you with these unprecedented fines of 15 crores or 4% of your annual turnover on similar lines as the GDPR. And the bigger question will be, if these companies are located outside the territorial boundaries of the country, how are we going to enforce these kinds of provisions? Because a lot of these provisions would be applicable to companies who may not be physically in India but still may be providing data related services. Also, the effective parameters for enforcement of the legislation has to be an integral part of the legislation. But yes, these fines are unheard of. We've heard fines up to a couple of lakhs, but 15 crores is unprecedented, and all companies who are physically in India or outside, or who are targeting the India as a data jurisdiction, will have to become very, very serious, because India should adopt a no-nonsense approach and a complete non-tolerant approach towards misuse or abuse of personal data. One trend that we have seen is that after Europe came up with its data protection law, what happened is most of the fake news propagator, that rumor mongers on the web space, they have registered themselves in Europe.
do you think similar things can happen in India? I distinctly believe that this particular bill is going to be extensively studied by cyber criminals, and they would want to find out the loopholes and exploit the same. But in case if we are expecting the personal data protection bill to be a remedy for fake news, then we are mistaken. This is not a law about fake news. India will require a dedicated legislation to fight fake news just on similar lines as what Malaysia has done. But expecting a personal data protection law to really meet up the challenges of fake news, given the fake news epidemic that India is currently seeing, is going to be a very, very tall challenge. I distinctly believe that we'll have to wait to see what are the specific provisions and the language of the provisions that are going to be passed by the Indian Parliament before we can actually try to see how effective or efficacious they are likely to become in the coming times. Thank you for talking to us, Mr. Duggal. Thank you. You were listening to a discussion on Personal Data Protection Bill. The participants were Pavan Duggal, cyber expert, and Prasoon Srivastav, journalist. This program is produced and presented by the News Services Division of All India Radio. This program is also available on our website, newsonair.com. You can also follow us on the News on AIR app for updates. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com. This is the FM Gold channel of All India Radio. In the special bilingual program, now we bring you a discussion on monetary policy and interim report of Finance Commission. The participants are economic analyst A.K. Bhattacharya and Santosh Tiwari. Arya Madan Mohan, journalist, initiates and moderates the discussion. Today we had the big meeting for the RBI and the MPC और उसमें क्या बोला उन्होंने कि आज इंटरेस्ट रेट नहीं कटेंगे, मतलब रिपो रेट नहीं कटेगा. तो our program today is going to look at the various aspects of this decision and also in terms of the background to the decision in regarding some degree of the structure of the MPC and the importance of monetary policy और fiscal policy की जो मेल जोल है और जुगलबंदी है उसके हिसाब से देश कैसे चलता है. Ashok ji, the Finance Commission report has also been released, and what do you see in that report? I think what the 15th Finance Commission, chaired by Mr. N.K. Singh, has submitted to the President of India what we call an interim report just for 1 year, that is for 2020-2021. As you would know that every Finance Commission has a mandate of recommending the nature of sharing of central revenues with the states for a period of 5 years. Now this 15th Finance Commission was expected to submit its report by the end of November, but the government in its wisdom realized that it must give it more time because a lot of developments have taken place, like GST, and most importantly 2 new union territories have been created in the form of Ladakh and Jammu and Kashmir. So the Finance Commission should take in its view what should be done, what kind of revenue sharing should happen with Jammu and Kashmir on the one hand and Ladakh on the other, because both are now new union territories. So the government has given the Commission 1 year extension. Now, but at the same time, the term or the applicability of the recommendations of the 14th Finance Commission will end on 31st March 2020. So what kind of a budget the Union government can present for 2020-21 without any fresh recommendations from the 15th Finance Commission? So in view of this, the 15th Finance Commission has given a limited set of recommendations applicable only for 2020 and 2021. In other words, the Finance Commission headed by Mr. N.K. Singh will be expected to give another report very soon, maybe before the 1 year period ends, which would mean by November 2020, wherein he will look at what kind of revenue sharing formula should be adopted for the remaining 4 years of the 15th Finance Commission term. What this report contains is as yet is confidential, because please remember that these recommendations will become the substance of the budget that will be announced on 1st of February. So my understanding is the President of India, Mr. Kovind, has received the report and he will transmit this report in full confidentiality to the Finance Minister, who in her wisdom will adopt
the recommendations, because the constitution says the government is obliged to accept the recommendations, and if it doesn't accept those recommendations, it must lay before the House, which means lay before the people of the country, that why it did not accept those recommendations. It has never happened actually that a government has not accepted the recommendations of this constitutional body. So I would imagine what this Finance Commission's one-year report has will be known only on 1st of February when Mrs. Nirmala Sitharaman presents her second budget for this government. अगर ये देखा जाए तो फिर आरबीआई और एमपीसी ने ठीक डिसीजन लिया है, क्योंकि इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है अभी बजट में क्या आएगा, क्योंकि अभी फाइनेंस कमीशन का भी रिपोर्ट उसमें लगेगा अभी, तो काफी चीजें हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। तो आपने एकदम सही कहा, क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा कि एक चीज होती है टैक्स बायोंसी। टैक्स बायोंसी का मतलब अगर 1 परसेंटेज पॉइंट अगर जीडीपी ग्रो करती है तो टैक्स कलेक्शंस कितनी परसेंट होती है। तो नॉर्मली देखा गया है कि पिछले कई सालों से हमारी टैक्स बायोंसी अभी 1.7 हो गई है। इसका मतलब 1% जीडीपी ग्रोथ हुआ तो 1.7% रेवेन्यू ग्रोथ हो गया। पर इस साल का टैक्स बायोंसी 0.7 है। तो अगर मान लीजिए या फाइनेंस कमीशन आज की तारीख की टैक्स बायोंसी के ऊपर निर्भर करके अगर 5 साल का रिकमेंडेशन देता है तो वो सेंटर के लिए और स्टेट्स के लिए बिल्कुल गलत होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम सिर्फ 1 साल का रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि ये साल जीएसटी के बाद पहला बड़ा साल है, फुल ईयर है। तो इसीलिए उन्होंने ये एक अंतरिम रिपोर्ट पेश किया, जिसे हम इंटरिम रिपोर्ट कह सकते हैं, 1 साल के लिए। Santosh ji, this is quite a significant decision, isn't it? What is your take on this, the fact that the RBI has not cut interest rate? To sum it up, one can only say that it is a surprise decision because majority of people, including industry and all, they were expecting that there would be at least a 25 basis point cuts. So FICCI has also come out with a statement saying that the industry chamber is disappointed with no rate cut by RBI. In fact, FICCI President Mr. Sandeep Somani said that it is a deep concern over the growth revision for the current year to 5%. Earlier it was 6.1%. So if the RBI is saying in the current financial year you will have a GDP growth of 5% only, which is quite a concern. पर इसमें साथ में ये भी है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा है आरबीआई की तरफ से, और आज मेरे ख्याल से शक्तिकांत दास जी ने बोला है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी हमारा इट इज आवर मेन पर्पस। तो इसके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन रेट उनके 4% टारगेट से ऊपर आ चुका है तो उसमें एक प्रॉब्लम है। जहाँ तक इन्फ्लेशन महंगाई की दर का सवाल है, वो पिछले साल 2 साल में काफी कंट्रोल रहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसको कि पार्लियामेंट ने जो कहा है, उसके तहत इनको जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर है, उसको 4% ±2%, यानी 4 ±2% के बीच रखना है। 2% से 6% तक। हाँ, 4% के ऊपर 2% ज्यादा या 2% नीचे, ये पार्लियामेंट का मैंडेट है आरबीआई का, और यही मेन मैंडेट होता है आरबीआई का। लेकिन सवाल ये उठता है कि जबकि महंगाई की दर जो है पिछले 1-2 साल में काफी कंट्रोल रही है, 4% की इधर उधर ही रही है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ आपका सबसे बड़ा कंसर्न हो जाए तो आप उसकी तरफ देखेंगे, उसको ठीक करने के लिए काम करेंगे। आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, उन्होंने भी पिछले महीनों में ये कहा है कि आरबीआई जो है वो विकास पर तवज्जो दे। सरकार अपनी तरफ से कई कदम उठा रही है, तो हर हफ्ते लगता है कोई ना कोई ऐलान होता है, कोई अनाउंसमेंट होता है। अपनी तरफ से सरकार हर कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उसको भी 30% से घटा के 22% किया गया है। ये काम जो कि पिछले दशक में नहीं हुआ, वो काम एक बार में सरकार ने कर दिया। सरकार अपनी तरफ से विकास जो कम हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए काम कर रही है। रिजर्व बैंक को भी इस सिचुएशन में, जबकि पिछले 2 क्वार्टर्स में 4.5% की विकास दर रही है एक साल में, जो कि हम पिछले 5-6 साल में 7% के इर्द गिर्द कर रहे थे, वहां से जब घट के इतनी आ गई है तो जाहिर तौर पर सरकार तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसको ठीक कर रही है, ला रही है। आरबीआई को भी सपोर्टिंग मेजर्स लेना होगा, आरबीआई ने लिया भी है। अगर आप देखेंगे इस साल में ही 5 बार रेपो रेट जो है वो कट हुआ है, 5.15% पर है, 1.35% गिरा है। लेकिन वहाँ एक दिक्कत है, जितना आरबीआई ने काटा है रेपो रेट को, उतना ट्रांसमिशन यानी जो लोग लेते हैं कर्ज उनको नहीं मिल रहा। सिर्फ 0.44% ट्रांसमिट हो चुका है। 1.35 में से ओनली 0.44% ऑफ 1.35 हैज बीन ट्रांसमिटेड। तो अगर ट्रांसमिशन की ये हालत है तो सबसे पहले तो ट्रांसमिशन को ठीक करने की जरूरत है, और उसके बाद आगे जाके रेपो रेट को और काटने की जरूरत है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुका पड़ा है, जो कैपेसिटी है उसका भी यूटिलाइजेशन रुका पड़ा है, पैसा है नहीं मार्केट में, उसको आप बढ़ावा कैसे देंगे।
रेपो रेट को और कट करेंगे, तो कम से कम 75% रेपो रेट कट और आगे होना है। आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि नहीं काटेंगे, इन्होंने कहा है कि आगे जरूरत पड़ेगी तो हम काटेंगे भी। लेकिन अभी अगर रेपो रेट कट होता तो ये एक इंडिकेशन होता कि हाँ, आरबीआई जो है वो विकास की दर जो खराब हो रही है या जो 4.5% पर है, उसको ठीक करने में तेजी से आरबीआई भी मदद वाले कदम जो है उठाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अशोक जी, जैसे आप जानते हैं कि आज आरबीआई का डिसीजन और एमपीसी बैठ के उन्होंने बोला था कि हम इंटरेस्ट रेट, हम रेपो रेट नहीं काटेंगे, तो ये काफी मेजर डिसीजन है। आपने सही कहा, ये बहुत ही मेजर डिसीजन है, क्योंकि सबको एक प्रतीक्षा बोलिए या आशा बोलिए कि इस बार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा कर रही थी, उसमें ये तय करेगी कि और एक बार रेपो रेट की दरें जो हैं वो घट जाएंगी। आपको याद दिला दूं कि इस साल फरवरी से अब तक 135 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट दरें घटाई गई हैं, मतलब 1.35 परसेंटेज पॉइंट घटी गई है। और आशा ये था कि इस बार भी रेट घटाएंगे, पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ऐसे कारण दर्शाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त शायद रेट घटाना मुमकिन नहीं है और जरूरी भी नहीं है। उसके उन्होंने 2 मुख्य कारण दिखाए हैं। Why did they not cut rates? What reasons has the MPC given? Because I saw very interestingly that it's a unanimous decision. Absolutely right. That's an important pointer, that even the hawks in the Monetary Policy Committee decided not to cut the rate. The doves and all, yes. Yeah, absolutely. Now, the issue is that the Monetary Policy Committee members unanimously believed that the much talked about transmission rate in the monetary policy cut, in a sense the repo rate cut, has begun to happen. For the first time in the last many months, the transmission rate as much as the repo rate cut in the last 1 year in the money market segments. But I thought that the credit market is yet to reflect fully the transmission. 0.44 basis points. Yeah, and that has begun picking up. So the RBI's Monetary Policy Committee believes that transmission should happen now. Second point, the Monetary Policy Committee was very concerned was about the inflation rate forecast. They believed that their primary concern is to keep price stability in the market. Therefore, they wanted the repo rate to remain unchanged. Third unstated reason is the Monetary Policy Committee members wanted to wait and watch to see what kind of a budget that is presented on 1st of February and what kind of a borrowing program the government announces on 1st of February. And in this case, the borrowing program essentially means what will be the fiscal deficit number. Because once the government announces its fiscal deficit, the market will get a sense of how much more money will the government borrow from the market, and that will have an impact on the interest rate picture. So therefore, the RBI decided that wait and watch, let us see what the government does with its budget, and we will take a view on 4th of February what kind of stance that we need to take. Remember that they have not changed their stance. They continue to remain accommodative. So we cannot rule out a cut in interest rate provided the government plays ball in terms of sticking to its fiscal deficit targets. संतोष जी, पिछले 3-4 दिनों में आरबीआई की तरफ से कुछ न्यूज आया था कि रूरल इकोनॉमी में एफएमसीजी की जो डिमांड है वो थोड़ी रिकवर हो रही है, लग रहा है, कुछ ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। तो शायद इसकी वजह से भी आरबीआई का जो व्यू है वो थोड़ा बदल गया है, हो सकता है। देखिए, आरबीआई मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप बोले जो एनालिसिस होती है इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन की, ग्रोथ रेट की, या किस सेक्टर में क्या हो रहा है, वो अगर कहीं होती है तो आरबीआई में होती है। इसीलिए कभी कभी ये होता है कि कुछ भी आरबीआई ने जो कदम उठाया है उसके बारे में सही या गलत कहने के बजाय क्या होना चाहिए था उसके बारे में आपका जो विचार है वो रखने की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं हुआ है कि आरबीआई जो है हमेशा सही ही रास्ते पे चली है। देखिए, एक वक्त ऐसा भी आया था जिस समय में कि आरबीआई ने रेट कट करना बिल्कुल मना कर दिया था। वो भी एक वजह रही है विकास के रास्ते पर जहां आज आप यहाँ खड़े हैं, उसके पीछे वो भी वजह रही है कि एक वक्त ऐसा आया था जिस समय आरबीआई ने रेट कट नहीं करेंगे ऐसा सोच लिया था। वो स्टांस गलत था। वो पिछले गवर्नर्स में जो वो स्टांस गलत था। इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी, हर कोई ये कह रहा था कि रेट कट होना चाहिए। उस समय अगर रेपो रेट कट हुआ होता तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता और एक साइकिल जो है वो उसी समय वक्त में शुरू होता। वो हुआ नहीं।
MPC consists of 3 people and 3 people come from the RBI, so 3 plus 3, and the RBI Governor Shaktikant Das, he is kind of the chairman, he is the caster of the final vote, matlab if there is a tie between the 3 plus 3. Today the MPC was unanimous. It's not as if one person said nay we should cut rates or whatever, so there must be some reason here. Is it possible that the inflation rate is worrying them, because the inflation rate has been moving up, prices of vegetables and prices of various other end products have been rising because the poor weather conditions have harmed the harvest at the end of the Kharif crop. So is it just that they are being careful, because the next meeting is hardly, we're in December now, February they are saying the budget, so they want to watch, they're saying, or is there something behind this that we should be looking for? As far as my understanding goes, maybe this could be the reason that on a fairly regular basis RBI was cutting repo rate. So they would have thought that let's give it a break and just don't do it. But because it's a lag process, right? It doesn't happen immediately. But also indicate that if there is a requirement, RBI is not averse to cutting rate as and when required. Because I think Shaktikant Das had said when he first became the governor that he felt that it was important to cut rates even in smaller incremental levels and then to reverse just based on the information that's coming. He said there's no reason that we have to just take a step and then keep cutting or keep raising for years. RBI's problem is that when you take a direction, then you cannot change the direction in quick succession. So what has happened, RBI has already taken a decision. The stance is accommodative. Rates are being cut. RBI is saying that yes, if required, we will support growth and will cut rate. As you said, that inflation is becoming a little bit of a concern, that it may go up. Probably more than that, what is the case right now is that RBI understands that further repo rate cut is a necessity. That it understands. But it just wants to have a look at what kind of measures government is coming out with and what would be the impact of those measures on inflation in the budget on February 1, and then after analyzing the impact of budget measures, if you take a decision, then that decision could stick for a longer period of time. That may be the internal discussions. When the MPC minutes come out, then you would come to know what has been discussed. That may be the case. But having said that, if you look at it in the overall context, whatever has been the discussion inside MPC, whatever has been the result of that discussion, like sticking to 5.15% rate, if you see the market means industry, if you see those who have to take loans, and if you look at the growth scenario today, the basic minimum which was required was a 25 basis points cut, and that has not happened. So that has dampened sentiments in industry segment, which has to play a greater role in reviving the economy, taking the GDP growth rate from 4.5% today to even 6% or 7% next year or year after. Unless until you give them comfort level, or unless until you give them a stable outlook that this is the direction in which we are moving, the investments won't start coming. What this decision has done is that it has again given a signal that wait and watch. What will RBI do? Or what will the government do in budget? Because maybe giving some goodies then which we can wait for and we can avail over that time. It's not very clear, but one thing you can always say that you cannot keep industry or the investors in a wait and watch mode for so long. संतोष जी, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मार्केट रिलेटेड है कि गवर्नमेंट को अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट करने के लिए अभी लगभग 1 लाख करोड़ की ज़रूरत है और उसके लिए सोच रही है कि BPCL वगैरह जो हैं वो बाकी कंपनीज को हम स्ट्रेटेजिक स्टेक जो है हमारा हम वो भी बेच देंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सेंसेक्स की जो लेवल है अट्रैक्टिवनेस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट बनी रहे, तो वो लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में ज़्यादा इक्विटीज़ में लोग पैसे डालते हैं। उसकी ये भी वजह है, तो उससे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आएगा मार्केट्स में कि उन्होंने अभी रेट नहीं काटा पाए 25 बेसिस पॉइंट्स? मुझे लगता नहीं। स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी रफ्तार से, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी रफ्तार से और जो भी इकोनॉमी में सिचुएशन है उसको देख कर काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मूडीज ने इंडिया के ग्रोथ रेट टारगेट को प्रोजेक्शन को कम किया था, S&P ने स्टेबल आउटलुक रखा है और बोला है कि आगे आने वाले 2 साल में इंडिया जो है वो अच्छे ग्रोथ करने वाले कंट्रीज में से रहेगा। तो मिक्स्ड आउटलुक है और इस बात में कहीं किसी को संदेह नहीं है कि भले ही आज आपका जो ग्रोथ रेट है वो 4.5% पर आ गया हो, लेकिन इसके बावजूद भारत जो है वो आने वाले 2 साल में या आने वाले सालों में सबसे तेज विकास करने वाला देश रहेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं है। दूसरी और एक बात यह है कि आप तेजी से, चाहे वो 4.5% GDP ग्रोथ रेट से भी आप बढ़ रहे हो, बट आप तेजी से एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हो। 2024-25 में आप हो जाओ या 2025-26 में हो जाओ, 1-2 साल का इधर उधर
बढ़कर हो सकता है। 7% की दर से अगर अभी बढ़ोतरी हो रही होती तो हम 2024-25 में होते। अब अगर थोड़ा कम हो रहा है ग्रोथ रेट अभी, तो थोड़ा 1-2 साल इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आप बनोगे 5 ट्रिलियन और विश्व में आपको एक बहुत बड़ी शक्ति बना के ऊपर लाएगा। इस बात को कोई भी, ना वो फॉरेन इन्वेस्टर ना ही जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो इग्नोर कर सकते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो कुछ भी पिछले 5-6 साल 7 साल में हुआ है, चाहे आप वो एनपीए सिचुएशन ले लीजिए, तो गवर्नमेंट ने आईबीसी लाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहां जो काम चल रहा है, कर्जा लेना और उसको वापस करना जो है, उस माहौल में बहुत तब्दीली आई है। रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी की तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं या रेरा की तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं, वहां भी जो मार्केट है उसमें थोड़ी खलबली हुई है, उसमें थोड़ा उथल पुथल हुआ है। उसके बावजूद अगर कुल मिलाकर आप देखें तो बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज देना और बैंकों से कर्ज लेने का जो साइकिल है इंडस्ट्री का, वो कहीं ना कहीं टूटा है। अब वो ट्रस्ट जो है वो फिर धीरे धीरे करके स्टैब्लिश होगा। मार्केट इकोनॉमी है, कंज्यूमर ट्रस्ट होगा, लोग फिर से लोन लेना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के ग्रोथ को देखते हुए आना शुरू होगा। सरकार जो रिफॉर्म्स ला रही है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया है, इन सब को लेकर एक सेंटिमेंट जो बना हुआ है कि हाँ, भारत सबसे तेजी से विकास करने वाले देश में होगा और अभी भी है, उस पर कैपिटलाइज किया जाए और आगे बढ़कर इन्वेस्ट किया जाए, वो माहौल नहीं बन रहा। उसको तेजी से बनाने की जरूरत है और इसी लिहाज से ये जो आरबीआई के डिसीजन है वो बहुत मायने रखते हैं। एके जी, आरबीआई बोल रही थी 3-4 दिन पहले कि रूरल डिमांड, एफएमसीजी डिमांड में कुछ चेंज आ गया है, कि वे लुकिंग एट थोड़ा मतलब कि ग्रीन शूट्स नजर आ रही हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ सेक्टरों में लग रहा है जैसे रिटेल क्रेडिट में थोड़ी बहुत उछाल आई है। अगर आप 2 व्हीलर्स और कार की बिक्री देखेंगे, उसमें भी पहले के तुलना से थोड़ी बहुत उछाल आई है। तो इसको आप ग्रीन शूट्स तो नहीं कह सकते हैं इस वक्त, पर यह है कि आशा का एक किरण आपको दिख रहा है। जीएसटी का कलेक्शंस नवंबर में पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे चीजों को देखते हुए आरबीआई ने यह तय किया कि अभी इस वक्त कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने ये भी देखा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल जो है वो घट गया है। पिछले जो मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई थी, उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल थी वो 74% थी। इस बार वो घटकर 68% आ गई है। इसका मतलब अगर आप रेपो रेट घटा भी दें, ऋण लेने की क्षमता या इच्छा इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घट के 68% आ गई है, वो अगर आप बिना कोई इंटरेस्ट रेट से भी आप पैसे उसको देंगे, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसको बनाने के क्या फायदा, वो तो बेच नहीं सकेगा, उसका डिमांड नहीं है, आउटपुट गैप। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू लिया है। There's another point about the stock market. The government wants to raise money for its disinvestment target. So it's very important that the market remains buoyant, because naturally that way the government will realize the maximum amount of money, especially in terms of strategic sales of certain shares of companies like BPCL, etc. So will this lack of an interest rate cut today have any impact on the markets? Do you think the markets will be uncertain and they may actually react negatively? Today's development is one of the many factors that will influence the stock markets. So yes, today the stock markets have reacted negatively to the news, but I don't think that this will be the reality for the stock markets in the days to come. There are many other factors at play. There's an overall inflation rate, there's an overall global environment, there is also what is happening to the financial sector. So I don't think that today's development will have a long-term impact on the stock market sentiment. So the impact on disinvestment program that you're talking about, you are rightly fearing, I think it will be, at this point in time, will be a little exaggerated. Santoshi, there's quite a critical thing in terms of the balance between the fiscal and the monetary policy. Now the RBI and the MPC can control the monetary policy, the setting of interest rates, etc. But they also look for the government to follow a reasonable tax policy. Now the government has cut corporate taxes, but at the same time the fiscal position of the government in terms of delivering stimulus at this point is not very great, because our GST is coming in below 1 lakh crore mostly, and that was below expectations. So is it possible that the RBI is also saying to the government, listen guys, we cannot do everything ourselves. If there is a market event in the markets abroad where the prices are very high and the trade war doesn't end, as we are all hoping and expecting it to, then we may need to cut interest rates fast. We need some
some ammunition in that respect. So do you think they are saying to the government, listen, we want you to do something more on the fiscal side, please do it in the budget? It's possible? Government providing any ammunition, RBI's role is pretty fixed and everybody has to understand that. RBI's role predominantly, as I said earlier also, is to maintain inflation at that level, 4% plus minus 2. So that is their predominant role. In maintaining that, just because consistently inflation was around 4% or below 4% for quite some time now, and the growth going down, obviously RBI now wants to support whatever government is doing to bring growth on track, and that has been RBI's intention, clearly shown in last 2-3 policies. And there is no other option than to continue with that policy. Right. What has happened today in terms of keeping the check on repo rate is probably indicative of the fact that RBI wants to have a clear picture before going whole hog on supporting growth, or before deciding again on a cut of around 75 to 100 basis points. If there is an understanding in MPC that no, this is the time when we should take a longish view and go into that direction. We have already cut repo rate 5 times, and now again if you want to indulge into that kind of an exercise, then let's wait for 1 or 2 months and provide a roadmap that this is the direction in which we will go and this is what it is for next 6 months. RBI always has an indicative stance of a medium term. It cannot change its stance quarter wise. It has to keep at least a 6 months or 8 months focus. अजीब सी बात है कि कभी मार्केट्स ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, कभी ये सोच के कि पता नहीं क्या हो रहा है. अगर आरबीआई आज और इंटरेस्ट रेट काटती तो ये भी हो सकता था कि सोचते कि आरबीआई डेस्परेट हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उनको आगे ग्रोथ नहीं दिखता है. मुझे याद है द यूएस फेड, ग्रीनस्पैन वगैरह जानबूझ के रोक देते थे क्योंकि मार्केट लोग सोचते थे कि शायद आगे ग्रोथ आने वाली है और उसकी वजह से वो अपना निवेश वगैरह करना शुरू कर देते थे. तो इट्स अ बिग गेम, बहुत बड़ा गेम है. अर्थनीति में मांग की जो एक कमी है, उस कमी को आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह साफ कर दिया कि उस मांग की कमी को सिर्फ इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से ही आप रिवाइव नहीं कर सकते. इसके लिए बहुत और भी सारे कदम सरकार को भी लेने पड़ेंगी और बॉल जो है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में द बॉल इज इन द गवर्नमेंट कोर्ट नाउ, वो बजट में क्या करेगी और बजट के पहले में भी और बजट में सरकार मांग को बढ़ाने के लिए कैसी कैसी निवेश का प्रबंध करेगी, उसके ऊपर काफी निर्भर करेगा मांग कैसे बढ़ेगी. और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखेगा 4 फरवरी को कि कैसे उस डिमांड को रिवाइव करने के लिए रीओरिएंट करें. There is a balance between fiscal and monetary policy. So where does India figure in this overall balance compared to other countries like America or whatever? They are all running huge budget deficits. India is also running budget deficits. Where does India figure, do you think? I think it will probably be not fair to compare India with the American economy because America has a currency which is the reserve currency of the world. The US or China or Japan have got runaway deficits. And US has also a huge trade deficit, but I don't think their economy is impacted to the great extent the way Indian economy is impacted, because in India the government is a big player in the economy, whereas the US government as such is not that big a player in the larger US economy. It's mainly private. It's only mainly private. So therefore in India, whatever the government does, the government fiscal deficit has a larger impact on the way the economy performs, on the market response, rather than what happens in the US because of the sharp difference, the character of the economies. Ashokji, what do you feel, last words about this current today as a RBI MPC focus in terms of them not cutting the interest rates? Is it a good signal or do you think they could have done more? I think it's a cautious move. They are not very confident that what the government will do in its budget. So the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has adopted a wait and watch policy. They are worried about inflation. They are also worried about growth, and hopefully the Monetary Policy Committee believes that things will become clearer on 1st of February and then it will take considered stand on view on what it needs to do next. Santoshji, so your last views, your last comments on the current MPC RBI decision, what are they? Probably after Union Budget on 1st of February, probably we will get the policy. After that, the RBI will come out with a clear indication in which direction it wants to move. But there is no denying the fact that
the real direction in which RBI needs to move is a further repo rate cut of at least 75 to 100 basis points. That is what is needed right now. पिछले 2 क्वार्टर्स में 4.5% की विकास दर रही है एक साल में, जो कि हम पिछले 5-6 साल में 7% के इर्द गिर्द कर रहे थे. वहां से जब घट के इतनी आ गई है तो जाहिर तौर पर सरकार तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसको ठीक कर रही है, ला रही है. आरबीआई को भी सपोर्टिंग मेजर्स लेना होगा. आरबीआई ने लिया भी है. इफ यू हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.5% एंड मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल प्रोबेबिलिटी this year's growth rate, if we don't have a stupendous growth rate in next 2 quarters, we will fall below 5%. So if India goes down from a 7% average growth rate to a 5% growth rate, obviously you would need a policy domain where fiscal policy and monetary policy both are working in tandem to help revive growth. So from government side, the government is taking all kinds of steps, and in budget also it is expected that government will come out with fiscal measures to support growth. But from the monetary policy side, RBI also has to look at, and it is saying that it is looking at the growth scenario. So they will have to have a monetary policy stance and also repo rate stance, which is supporting growth. And what does that mean? That means that go for further rate cuts, also in a fashion and in a manner that it is pretty quick, so that industry gets emboldened in terms of investment. And that is the way where RBI has to go. When and how it happens, time will tell. Thank you very much. Thank you. Thank you. You were listening to a discussion, Monetary Policy and Interim Report of Finance Commission. The participants were economic analysts A.K. Bhattacharya and Santosh Tiwari. Arya Madan Mohan, journalist, initiated and moderated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website news.air.com. You can also follow us on the News on AIR app for updates. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com. आज की तारीख